सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the just two important topics regarding to solubility. First is your solubility of solid in liquid and second is your solubility of gas in liquid. Regarding to just solubility of gas in liquid, we have discussed about the affecting factors as a just nature of gas. Second, just nature of the solvent. Third, effect of temperature. Fourth is your presence of other substituent. And fifth is your just effect of pressure. If we go with the just effect of pressure, then there is the important rule of the just regarding to the solubility that is called as Henry law or Henry rule. What is that? We'll see about that, and by using Henry law, we'll form the soda water as a coloring and we'll know about the just different kinds of the just important disease which are regarding to the solubility of the gas. So first of all, this is the Henry law. Henry law. This was about the effect of pressure on solubility of gas in liquids. Gas in liquids means how pressure affects to the solubility of gas in liquid. If we'll go with the just Henry law, then according to this law, at constant temperature, solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas. Directly proportional to the, according to this law, just we can say at constant temperature solubility of gas is directly proportional to the applied pressure on gas. Applied pressure on gas. This was regarding to just Henry law. If we'll go with the solubility of gas, then the amount of the just gas is your M and the applied pressure is P, then this will be M is equals to KH into P. This is the equation number 1 and this is known as Henry law. Henry's law. For this, T temperature should be constant. If we'll go with the just M, then what is M? The M is just a dissolved amount of the gas. Dissolved amount of the gas. And P is your pressure applied on the gas. Thus we can say pressure of gas at equilibrium. Pressure of gas, P is the pressure of gas at equilibrium. If we go with the just, if we plot the graph between the just M and P, then the graph will be as follows. This is the pressure P. This is the solubility of gas. Is directly proportional. M is proportional to P, and T is the constant. Temperature is constant. This was about the just Henry law. If we'll go with the just Henry law in terms of mole fraction, so we can say in terms of mole fraction, then what is that?
just partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas, we can say partial pressure of the gas in vapor phase. So we will say partial pressure of the gas of the gas in vapor phase, gas in vapor phase is directly proportional to is directly proportional to the mole fraction of gas. This is the just in terms of the partial pressure, or you can say mole fraction. If we go with this law, then it is as follows. This is the partial pressure is proportional to, this is the x of gas. Here is the P is equals to, you can say KH dot x of gas. This is the second form of the just Henry law. Here P is the partial pressure of gas in, just you can say vapor phase. In vapor phase, this is the KH, Henry constant, Henry's constant, and this is the x of gas, means mole fraction of gas, where it will be equal to the moles of gas upon total moles of mixture, total moles of mixture. This was about the just Henry law. Same, if we plot the just graph between partial pressure P, this is the P and this is the x of gas, then it will directly proportional, T should be constant. So we can add one of the statement also, just at constant temperature. Here is the at constant temperature. At constant temperature, just we can say partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas. This was about the just Henry law. If we'll go with the just specific thing, then what is that? From equation second, this is the from equation second. If we'll calculate the value of just x of gas, then this is the x of the gas. X of gas meaning is just mole fraction of the gas. Then what will be? Just it will be P upon KH. This is the P upon KH. This is your equation third. Here's the one of the important thing. What is that? Just it will increase on increasing temperature. Just you will say value of KH also increases. Then X of gas means mole fraction of the gas decreases. That's why we can say that cold water is much better than the hot water for the just aquatic animals. So we can say here, so we can say that cold water is better than the hot water for aquatic animals. इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर्टिकुलर कोल्ड वाटर में रहना. तो ये था आपके पास में जस्ट हेनरी लॉ in terms of mole fraction and just amount of the just gas.
Read the matter properly. We'll go with the limitations and applications of the Henry law. इसी क्रम में further, if we'll go with the just limitations of the Henry law, then what are the limitations where it can just applied or not? We'll see. So first of all, we'll go with the limitations of Henry law. This is the limitations of Henry law. Yeah, Henry's law. There are following limitations. Following limitations. What are they? First, as we have discussed, the pressure should be high, but for this, pressure may not very high. प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. नंबर 2, टेम्परेचर शुड नॉट वेरी लो. टेम्परेचर भी पर्टिकुलर बहुत लो नहीं होना चाहिए. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड should very low. This was about the just third limitations, and fourth limitations is you can say molecular composition. Yeah, you can say there should not any change in composition of गैस. पर्टिकुलर गैस को डिसॉल्व करने से पहले और डिसॉल्व करने के बाद में उसके कॉम्पोजिशन में भी कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरी लॉ. नाउ इफ विल गो विद द एग्जांपल, देन both NH3 and HCl are less soluble in benzene. So these follows Henry law. While NH3 and HCl in one another are much soluble. So these doesn't follow Henry law. मीन्स पर्टिकुलर अगर HCl और NH3 को हम बेंजीन में डिसॉल्व करें तो बेंजीन अपने आप में नॉन पोलर है, while NH3 and HCl बोथ आर पोलर, तो सॉल्युबिलिटी वहां पर डिफरेंट जस्ट लोअर होगी. बट अगर NH3 की बात करूं, उसको HCl में या HCl को NH3 में दोनों पोलर है, डिसॉल्व कर दूं तो वहां सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी. जब फर्स्ट कंडीशन की बात करें बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर हेनरी लॉ फॉलो होगा.
because of we have discussed solubility of gas and liquid should be low. और अगर मैक्सिमम सॉलिबिलिटी हुई तो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए NH3 और प्लस HCl का मिक्सचर हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता. दिस वाज अबाउट द लिमिटेशंस. नाउ आई वुड लाइक टू गो with the just applications. What are the applications? Listen me carefully. So this is the applications of Henry law. Applications of Henry's law. First, in the formation of soda water. सोडा वाटर फॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर बाय lowering या बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, it will maximum solubility of CO2 gas, resultant there will formation of soda water, or we can say cold drinks. मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर फॉर्मेशन के लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें और प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर दें, तो उस प्रेशर में CO2 की उस बेवरेज में उस लिक्विड में सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड रिजल्टेंट इट विल फॉर्मेशन ऑफ द सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक. इफ विल गो विद द जस्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन, देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, that is your anoxia. Anoxia. What is the meaning of anoxia? Particular peoples who lives at heights in their body, it will low amount of O2 ड्यू टू लो प्रेशर. हाइट्स पे प्रेशर लो होगा और प्रेशर लो होगा तो जो लोग वहां हाइट्स पे रहते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा. इन दैट केस they don't have proper capacity, just you can say they don't have capacity, just you can say proper capacity is the much better, proper capacity of thinking, and such disease is called as just anoxia. इसी के जस्ट अपोजिट बात करें तो जो सी लेवल पे रहते हैं, लाइक यू कैन से नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट बात करें, केरला, मद्रास, चेन्नई, तो वहां पर्टिकुलर वो सी लेवल के पास में है तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा और वहां के पीपल्स में उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होने के कारण से. सो दे हैव प्रॉपर कैपेसिटी टू थिंकिंग. They don't have any kind of the anoxia disease in their body and they are more sharper, they are more intelligent than the people who lives at the height. This was regarding to second application to know about the anoxia, first in the formation of the soda water. Now we'll take just the third application, read the entire matter properly.
Now, the time to discuss about the third and last application of the Henry law. It's for the scuba divers. और इसीलिए पर्टिकुलर जब हॉट ड्यूरेशन टाइम पीरियड आता है तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स माइग्रेशन कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ डायोड जस्ट O2 ऑक्सीजन गैस will be lowered. That's why there exists migration. Now the time to discuss about the third application. Scuba divers की बात करें तो जब ये लोग सी में पर्टिकुलर डेप्थ में जाते हैं, सी में जब डेप्थ में जाएंगे तो पर्टिकुलर डेप्थ में जाने पर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्रीदिंग के थ्रू देयर विल large amount of O2 and N2 in their blood. उनके ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी, इन दोनों गैसों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. But when they becomes at beach, जब वो बीच में आते हैं तो वापस से डेप्थ से हाइट की तरफ जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा. प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो डिजोल्व गैस है वो प्रेशर से बाहर आएगी, और प्रेशर से बाहर आएगी तो इन ब्लड वेसल्स देयर विल formation of bends, and this disease is called as bends. तो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जनरली एक मिक्सचर यूज करते हैं ब्रीदिंग में O2 और N2 के साथ में. दिस इज द O2, दिस इज द N2. ये दोनों तो यूज करने हैं. इसके साथ साथ एक और गैस इंक्लूड करते हैं, दैट इज योर हीलियम, जिससे उसका टोटल प्रेशर डिक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है. और इजी वे में, क्योंकि जब बैंड डिजीज होता है तो दे फील्स अ लार्ज पेन इन चेस्ट. ऐसे लोगों को, स्कूबा डाइवर्स को चेस्ट में बहुत तगड़ा पेन होता है, कई बार तो डेथ हो जाती है. तो उसको कम करने के लिए प्रोबेबिलिटी को पर्टिकुलर ये दोनों के गैस के साथ साथ हीलियम को भी मिक्स करते हैं. इसमें हीलियम आपके पास में 11.7% होगा. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों को. हीलियम विल बी 11.7%. जस्ट आफ्टर देन हीलियम विल गो विद द N2. देन दिस इज द 56.2% as a N2, and dioxygen, rest it will be dioxygen. What is that? That is your 32.1% as a dioxygen. This mixture will be used in just breathing or respiration in the cylinders, and it is also used in artificial breathing. Artificial breathing में भी हम यही यूज करते हैं, जो कि जनरली पेशेंट को हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करते हैं मास्क के थ्रू. सो दिस वाज अबाउट द हेनरी लॉ. So dear student, we'll go with the new topic in the next video. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्यार के साथ में, इसी हिम्मत के साथ में, एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है पर्टिकुलर आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट फ्लो क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है पर्टिकुलर, एंड उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की. इन सब को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में हम जो आज हमने डिस्कस किया हेनरी लॉ, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए यूं ही अपना विश्वास जताते रहिए, यूं ही अपना सपोर्ट देते रहिए. रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, आपके साथ हूं हमेशा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.